Assalamu alaikum guys, welcome back. I'm Shafahad Khan and today we are going to start out a very important series of lectures on the National MDCAT Rapid Revision. Okay, and that's me, Shafat Khan, and this is my logo. Okay, and guys, uh, अब यहाँ पर in videos में I'm gonna do something very special, and that is I'm gonna try covering the important questions from the past papers which have common syllabus for all the 4 provinces, so any province of Pakistan can follow it. Okay, and I'm gonna do my best to revise as many concepts as possible in this limited time because your national MDCAT is scheduled very soon on the 29th. Okay, and let's get started then. There we go. Let's begin. Okay, so this is our first question, which has been taken from a past paper. Okay, I'm not going to reveal the year of this question, but it's just a random question. So this is more like a test type of thing. Okay, and like it has random questions from all over your past paper booklet. So guys, it would be very helpful to do it yourself first and then compare it with my solution. Okay, and if you have any questions or any queries, you can comment it down in the comment section. And without wasting any more time, let's get started. Okay, so a particle moves from position R1 to position R2 under the action of a force. Find the work done by the force. This is a very frequent question. You might have come across this question many times. Okay, we've been given two position vectors. Okay, position and position of R1 and R2. There is actually a vector sign on top of it, and a force is over here. Now we are asked to find out the work. So you know the formula for work done, right? For work done का क्या formula होता है भाई? Work done is the dot product of force and displacement, right? Force और displacement का क्या है? Scalar product है या dot product है, right? तो अब अच्छा, force तो हमारे पास है, force का vector तो ये रहा, but where will we get the displacement vector? So well, we can get the displacement vector from these two position vectors. And how? Let's draw out a Cartesian plane over here. Okay, this is our x-axis and this is our y-axis. Okay, now let's assume that this point or this position vector, which starts out from the origin, goes on to somewhere over here. So this vector over here is represented by this position, which is 3i plus 2j minus 6k. Okay, and this second vector is represented over here, let's say, and it is 14i plus 13j plus 9k. Now, these are the two position vectors. I hope you guys remember what position vectors are. A vector that starts out from the origin and goes on to that point. ठीक है, इसे position vector कहेंगे. अच्छा, and by the way, अगर ये याद नहीं है किसी को तो वो link मैं नीचे description में दे दी है, उसको check कर लें. Vectors की एक पूरी playlist मौजूद है आप मेरे YouTube channel पे, ठीक है. Now, so we've got these two vectors. अब इन दो vectors के आने के बाद हमें चाहिए displacement vector. Okay, so अब displacement vector के लिए हम क्या करेंगे? For instance, ये वाला point हमारा starting point था और ये वाला ending point है, ठीक है. इस point से इस point तक आने के लिए ये एक vector complete cover हुआ है, ठीक है. So this is actually a displacement vector, ठीक है. Now, so to find out the value of this displacement vector, you know that this is a closed triangle. You can apply the head to tail method or head to tail rule. ठीक है, तो head to tail rule simple है, आपको तो आता ही होगा. अगर नहीं आता है तो उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे, वो भी आप देख लीजिएगा. ठीक है, ये पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, if you look at these two vectors, they have been joined from head to tail. Okay, meaning on the head of the first vector, the tail of the second vector lies. When you add these two, you'll get the resultant. Resultant कैसे draw करेंगे? Resultant always starts out from the tail of this first vector and ये जाता है कहाँ तक है? To the head of the second vector. ठीक है, ये second vector है, इसके head तक ये resultant जाता है. तो ये आपका resultant है जो कि आपके पास ये रहा given है. ठीक है, ये आपके पास first vector है और ये second vector आपने find करना है. ठीक है, अब इस ब्लू वाले वेक्टर को मैं ए बी कह देता हूँ. ठीक है, इस नीचे वाले वेक्टर को मैं ओ बी कह देता हूँ और ऊपर वाले वेक्टर को मैं ओ ए कह देता हूँ. ठीक है, तो अब आप एक इक्वेशन बना ले. ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी. ठीक है, now just simply plug in the values and you'll get your position vector. ठीक है, अब sorry, the
the vector of AB actually. You'll get the vector of AB, not the position vector, the vector of AB. ठीक है, अब OA की वैल्यू क्या है भाई? 3I plus 2J minus 6K plus AB, which you need to find, is equal to OB, which is 14I plus 13J plus 9K. So AB is equal to 14 minus 3 is 11I plus 13 minus 2 is again 11J plus 9 plus 6 is gonna be 15K. Now you've got AB, you know what's the vector of F is. You can now apply the dot product of these two vectors. So 11I plus 11J plus 15K को आपने dot कर देना है force के साथ, because that's the formula for work done right over here. ठीक है, तो ये आपका force जो है वो है 8I plus 2J plus 6K. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट का क्या तरीका है? ठीक है, ये भी वीडियोस में कवर हो चुका है. इन डॉट प्रोडक्ट व्हाट यू डू इज यू जस्ट मल्टीप्लाई द, अच्छा आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं जिनके ये यूनिट वेक्टर सेम होते हैं. मतलब I के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ना, वो I के ही कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा. J के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो J के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और K के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो K के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. एंड आफ्टर दैट यू आर गोना ऐड ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो करके देखते हैं. 11 टाइम्स 8 इज 88 प्लस 11 टाइम्स 2 इज 22 प्लस 15 टाइम्स 6 इज ये आप कर लेते हैं यहाँ पर. 15 6 6 5 30, 6 1 6 7 8 9, so 90. ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड कर दें. 88 है तो 90 हो गया, 110 हो गया प्लस 90 which is gonna be 200. okay, so you've got 200 joules as the work. ठीक है, so that's your answer. I hope you guys got the same answer. Okay guys, so now let's move on to the next question. Okay, so now question 2, ये भी एक काफी frequent question आता रहा है past papers में और आपके सामने भी आता रहा होगा. ठीक है, so now a body starts sliding on a rough horizontal surface with a speed of 10 meters per second. अच्छा, horizontal surface है and start करती है, body की starting speed क्या है? 10 meters per second की. If coefficient of friction is 0.2, find the distance traveled by the body before coming to rest, where the G is 10 meters per second. Okay, so it's always helpful to draw a small diagram for yourself. ठीक है, so let's assume this is our body. ठीक है, ये आपकी body है and it is placed on a horizontal surface. Let's assume this is our horizontal surface on which it is placed. Now, on this horizontal surface, if this body is placed, they told us that it starts from a speed of 10 meters per second. So 10 meters per second is your starting speed. ठीक है, and it's not a मतलब इसकी कोई additional ये speed increase नहीं हो रही. ठीक है, इसको rest पर आना है, मतलब ये decelerate होगी, इसकी speed कम होगी. So the final speed is gonna be 0 meters per second. It's gonna come to rest, and in doing so, it is gonna cover some distance, right? And apart from that, इसकी कोई deceleration भी होगी या फिर acceleration उसे कह देते हैं. अच्छा, वो 10 नहीं होगी, याद रखिएगा, because this 10 is the acceleration of free fall. ठीक है, वो 10 हो भी सकती है, कोई और value भी हो सकती है. ठीक है, so now let's see the stuff that's given to us. Okay, we've been given the initial and final velocities and we are asked to find the distance. Okay, no time has been given to us. So now one एक और चीज गिवन है कि 0.2 जो है ये इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर आप याद करें तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हमने पढ़ा था, राइट? सो इफ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, since this object is not going up nor is it coming down, normal reaction force जो है वो mg के equal होगी, because they are gonna, the object is not moving up or down. Okay, so इस normal reaction force की जगह मैं लिख सकता हूँ m multiplied by g.
m मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा g की वैल्यू इन्होंने दे दी है 10, तो मैं 10 डायरेक्ट लिख लेता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास पता है 0.2 इज इक्वल टू f। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 2m, राइट, 2 टाइम्स द मास। अच्छा जी, फ्रिक्शनल फोर्स आ गई हमारे पास, मीनिंग दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी व्हिच विल रिजल्ट इन इट्स डिसेलरेशन एंड हेंस stopping it, right? So now if this is our frictional force, what's the this is the only force which we have, right? Force is equals to mass multiplied by acceleration, right? F is equals to ma. So instead of the F we can place the m and a, which is equal to 2 times of m. So the m's are going to cancel out and we are going to get our acceleration. But remember, ये acceleration positive नहीं negative है, ठीक है? This is a negative acceleration क्योंकि ये frictional force से आई है, ठीक है? अब आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आ गई, आपके पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज भी आ गई। नाउ कैन यू कैलकुलेट द डिस्टेंस? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट वी कैन अप्लाई? Well, the same v squared is equals to u squared plus 2as can be applied because time is not given, so we need that equation that does not include time. अब इसको यूज करते हुए आप s की वैल्यू निकाल लें, ठीक है? आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप देख कर लीजिएगा। ये 0 is equals to 100, मेरे ख्याल से 25 आंसर आ जाना चाहिए इसका। Yep, 25 ही आ रहा है। S is equals to 25 meters, ठीक है? Now let's move on to the next question. Okay, now a battery of EMF 40 volts has an internal resistance of 5 ohm. If the battery is connected to a resistor, to a 15 ohm resistor R, what will be the voltage drop across R? ठीक है, अब इसकी भी एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास एक छोटा रेजिस्टर है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आपके पास बड़ा रेजिस्टर है, एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है? और ये आपकी बैटरी है, ठीक है? इसकी ईएमएफ आपको गिवन है, इट्स 40 वोल्ट्स, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास है 5 ओम्स, एंड ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 15 ओम का है, ठीक है? तो अब इसका क्या करेंगे? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, ठीक है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 15 ओम के अक्रॉस, वो फाइंड करना है। इजी है, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है, सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाती है, राइट? टोटल रेजिस्टेंस 5 + 15 20 ओम हो गई, ठीक है? आगे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई, टोटल वोल्टेज आपको पता है इट्स 40 वोल्ट्स ईएमएफ, ठीक है? आप टोटल करंट निकाल सकते हैं I = V/R से, जो ये कितना आ जाएगा 40/20, जो कि आ गया 2 एम्पियर। अब आपके पास करंट आ गया, आपको पता है कि यही 2 एम्पियर का करंट 15 ओम से भी पास हो रहा होगा, 2 एम्पियर। आपके पास करंट आपको पता है, आपके पास रेजिस्टेंस पता है, तो कैन वी कैलकुलेट द वोल्टेज? V = IR से, ओम्स लॉ से। सो करंट इज 2 and R is 15, so 15 2s are 30 volts. 30 volts is being dropped across this R, ठीक है? Now moving on to the next question. Okay, a particle of charge minus 0.04 coulomb is projected with a speed of 2 raised to the power of 4 meters per second into a uniform magnetic field B, which has a strength of 0.5 Tesla. If the particle's velocity as it enters the field is perpendicular to B, what is the magnitude of the magnetic force on the particle? अच्छा guys, simple है, you just need to know a formula, ठीक है? Since aptitude है तो इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आपने you should be able to do the questions very quickly. आपके पास अगर चार्ज गिवन हो जो कि कितना है -0.04 कूलम, आपके पास वेलोसिटी गिवन है जो कि 2 raised to the power of 4 meters per second है, एंड आपके पास टेस्ला यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है 0.5, तो आप क्या कैलकुलेट करना है? आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो F = BQV लगा लें। BQV sin theta is the formula, but since they told us that it's entering perpendicularly, तो perpendicular entry का मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी, and sin 90 is 1. So बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, you'll get your answer, जो कि आएगा 400 न्यूटन। E is your answer. Okay, moving on to the next. Due to the magnetic force, a positively charged particle executes uniform circular motion within a uniform magnetic field B. If the charge is Q and the radius is R, which of the following expressions gives the magnitude of the particle's linear momentum? Linear momentum का formula अगर आपको याद हो, it's mass multiplied by velocity, right? You have the linear momentum's formula, and they told you that there is a charge which is executing a uniform circular motion. Uniform circular motion means that it is traveling on a circular path, but its speed is not changing. अच्छा, अगर uniform circular motion पर वो travel कर रहा है and it's moving in a magnetic field, then that means the centripetal force कौन provide कर रहा होगा?
is going to be provided by the magnetic force. ठीक है, magnetic force is providing the centripetal force. Centripetal force का formula क्या है? mv squared upon r. ठीक है, एंड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला BQV अभी पढ़ा था, चार्ज के ऊपर यही फॉर्मूला लगेगा. अच्छा, V से V को मैं कैंसिल आउट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा BQR इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो मोमेंटम इज इक्वल टू BQR. सो BQR इज योर आंसर. यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट. Okay, you have a transverse wave on a longitudinal horizontal rope with a wavelength of 8 meters. Okay, their wavelength is 8 meters and its speed is 2 meters per second. Okay, speed and wavelength have been given to you. What's the formula that we can apply? V is equals to F lambda. If you remember it, we can get the frequency from this formula and we can also get the time period from this formula. तो आपके पास अगर speed given है 2 is equals to F multiplied by lambda which is 8. So frequency आ गई आपके पास 1/4 hertz. और टाइम पीरियड कितना आ गया? 4, क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, अब टाइम पीरियड आ गया आपके पास. At time 0, a particular point on the rope has a vertical displacement of plus a, where a is the amplitude of the wave. At what time will the vertical displacement of the same point on the rope be minus a? अच्छा जी, अब इन्होंने ये कह दिया कि जब टाइम 0 था ना, तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था वो था प्लस a, मीनिंग टाइम 0 पर वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही थी वो वेव, बल्कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस a से स्टार्ट हो रही थी. तो फिर वो कुछ कॉस के शेप की वेव होगी. ठीक है, कॉस वेव होगी. और आपको पता है कि एक वेव का जब एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो फिर टाइम पीरियड के वो इक्वल टाइम गुजर जाता है. ठीक है, अब मतलब टाइम पीरियड इसकी 4 सेकंड्स है. इसका इस वेव का टाइम पीरियड 4 सेकंड्स है, तो आप यहाँ पर एंड में 4 सेकंड्स लिख लेंगे. अच्छा, अगर ये 4 सेकंड्स है, आपको ये भी पता होगा कि एक वेव को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वार्टर. अगर ये चारों क्वार्टर्स का टोटल टाइम जो है वो 4 सेकंड है, तो एक क्वार्टर का टाइम 1 सेकंड होगा, राइट? ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये 4 सेकंड. अब इन्होंने कहा है कि जब इस टाइम 0 था तो उस पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था वो प्लस एम्पलीट्यूड के इक्वल था. ठीक है, अब ये बताएं जब ये माइनस एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जब आ जाएगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? माइनस ए. जब उसका पार्टिकल माइनस ए के एम्पलीट्यूड पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी ही ये फिगर आउट कर चुके हैं कि ये 2 सेकंड्स होगा. 2 seconds is your answer. ठीक है, moving on. Now the dimensions of volume and acceleration. Volume, अच्छा, this is an easy one. Volume कैसे कैलकुलेट करते हैं? Length into width into height, right? मतलब L. So L क्यूब हो गया. And acceleration का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड. मीटर्स मतलब लेंथ and second मतलब time. So LT to the power of -2. So ये हो गया L cube and LT to the power of -2. C आंसर है आपके इसमें. A vector such as the velocity of a body undergoing uniform translational motion which can be displaced parallel to itself and applied to any point is known as. अच्छा, by the way, ये book अगर आपने ठीक से पढ़ी हो तो ये आपको पता होगा, लेकिन concepts भी आपके कॉन्सेप्ट्स भी इसके बारे में क्लियर होने चाहिए. अच्छा, कोई ऐसा वेक्टर जो कि यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है. ठीक है, और उसको आप डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ. मतलब अगर ये फॉर इंस्टेंस ये आपका वेक्टर था, तो इसको अगर आप उठा के यहाँ पर भी रख दें तो वो वेक्टर वही रहेगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा. इसको उठा के आप यहाँ रख दें, लेकिन जब तक आपने इसकी डायरेक्शन नहीं बदली और इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला तो वो वेक्टर सेम ही रहेगा. ऐसा वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इस वेक्टर को अगर आपने बुक में पढ़ा हो तो ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से पास नहीं करता एंड उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट अगर रखें और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखें तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता, उसे हम फ्री वेक्टर कहते हैं. ठीक है, अपोजिशन वेक्टर इसके ऑपोजिट होता है, वो सिर्फ इससे क्या कहते हैं, ओरिजिन से पास हो रहा होता है, उसको आप उसके पैरेलल डिस्प्लेस नहीं करा सकते. ठीक है, उसको ओरिजिन से ही पास कर होना होता है. ठीक है, moving on. What is the flux density of a 0.3 centimeter from a long straight wire when there is a current of 25 amperes in the wire and permeability of free space की वैल्यू भी आपको गिवन है. अच्छा, by the way, I would suggest कि ये वैल्यू आप याद कर लें क्योंकि it's not always given. ठीक है, permeability of free space की 4 pi raised to the power of -7. अच्छा, ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ए लेवल्स में भी अच्छे खासे डिटेल से पढ़ाया जाता है ये. ठीक है, और इंटर वालों को भी
पता होता है। अच्छा, ये आपके पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें 25 एम्पेयर से करंट पास हो रहा होता है, ठीक है। एंड वो पूछ रहे हैं कि इस वायर से अगर आप कितने 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, लेट्स अज्यूम दिस इज अ 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस पर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेस्ला में वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था कि ये टेस्ला जो है, ये बी, ये प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू द वायर and is inversely proportional to the perpendicular distance from the wire. तो ये डिस्टेंस से परपेंडिकुलर इनवर्सली रिलेटेड है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट डाल देंगे। कांस्टेंट इसमें होगा 2 पाई, सॉरी नॉट 2 पाई, अच्छा इसका कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी, ठीक है। म्यू नॉट आपकी यही परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई रेज टू द पावर ऑफ -7। अच्छा, करंट की वैल्यू है 25 एम्पियर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा डिस्टेंस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, सेंटी को आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। अच्छा, 25 टाइम्स 2 इज 50 अपॉन 3, और ये 10 रेज टू द पावर ऑफ -7 है, ये -2 ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा। सो -7 से आप 2 हटा दे तो -5 हो गया, 10 रेज टू द पावर ऑफ -5। अच्छा, और इसको आप कैंसिल कर दें तो 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, सो 16 रेज टू द पावर ऑफ -5 हो गया। अच्छा, 16 कहीं नहीं है तो आप ये एक डेसिमल प्लेस पीछे ले जाएं तो ये 1.6 रेज टू द पावर ऑफ -4 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1.67 raised to the power -4 is the closest answer. That's your answer. And now let's move on to the last question of this video. If an object is placed 30 centimeter from a convex lens whose focal length is 15 centimeter, the size of the image compared to the size of the object will be approximately. Okay, so अब यहाँ पर आपने एक चीज अच्छे से याद रखनी है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस किसे कहते हैं। कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, ठीक है, जिसको कॉन्केव इसलिए कहते हैं क्योंकि एक केव लाइक स्ट्रक्चर है, देखो अंदर की तरफ केव की तरह की डिप्रेशन बनी हुई है। एंड कॉन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, ठीक है। प्लस कितनी, 15 सेंटीमीटर गिवन है। एंड इन्होंने कहा कि 30, अच्छा ठीक है, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ की वैल्यू इज 15 सेंटीमीटर्स, बट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस डबल द फोकल लेंथ, मीनिंग 30 सेंटीमीटर्स पे प्लेस किया हुआ है उसे, ठीक है। 30 सेंटीमीटर्स पे आपको एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, मतलब आप, और अगर आपको थ्योरी से याद हो, जब भी आप 2f पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका साइज चेंज नहीं होता, दूसरी साइड पे एक रियल इन्वर्टेड बट सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। So it's gonna be the same size. And that's it, guys. That's it for this video. Thank you so much. And guys, कोई भी question हो, if you have any question, please do hit me up down in the comment section. Yeah, you can also come visit my Facebook page or follow me on Instagram, etc. Okay, and see you next time.